Retinal detachment. It is a separation of the sensory retina from the retinal pigment epithelium by the subretinal fluid. Retina forms the innermost part of the eyeball. Outer is sclera and choroid, then comes the retina. When we see in the microscope, then after sclera and choroid, there is part of the retina. Grossly, it consists of the two parts, retinal pigment epithelium and the sensory retina, which starts from the layers of the rods and cones and extends up to the internal limiting membrane. रेटिनल डिटैचमेंट सुनते ही हमारे जहन में आता है कि इट्स द डिटैचमेंट ऑफ द रेटिना फ्रॉम द कोरोइड, बट इट्स नॉट द केस. रेटिनल डिटैचमेंट मीन्स डिटैचमेंट ऑफ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम फ्रॉम द सेंसरी रेटिना, यानी लेयर्स रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की डिटैचमेंट हो जाएगी फ्रॉम द लेयर्स ऑफ द रोड्स एंड कॉन्स. अब इन दो स्पेसिफिक लेयर्स में ही क्यों सेपरेशन होती है, बाकी और क्यों नहीं? रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम कोरोइड से क्यों नहीं डिटैच होती, या फिर किसी और लेयर में क्यों नहीं? सो हियर इज द आंसर. रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम सेल्स आर फर्मली अटैच्ड टू द ब्रूक्स मेम्ब्रेन ऑफ द कोरोइड. बहुत स्ट्रॉन्गली फर्मली अटैच होते हैं. उनका बेसल पार्ट, दे हैव टू पार्ट्स, बेसल पार्ट एंड द एपिकल पार्ट. बेसल पार्ट उनका ब्रूक्स मेम्ब्रेन के साथ बहुत फर्मली अटैच होता है, और दे आर ऑल्सो अटैच विद ईच अदर विद द टाइट जंक्शंस. सो they form the retinal barrier and they are firmly attached to the Brooks membrane and with the each other. But at the apical part they have many processes which surrounds and interdigitate with these layers of the rods and cones. Here these are the layers of the rods which are thin and long, and the thick one are the layers of the cones. So they interdigitate and surround the layers of the rods and cones, but the important part is that they are not anatomically connected with them. So ये सराउंड कर रहे हैं, इंटरडिजिटेशन हो रही है, लेकिन ये एनाटोमिकली इनके दरमियान कोई जंक्शन नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये इजीली सेपरेट हो जाते हैं. और कोई भी ट्रॉमा या कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह हो तो these two layers are the most vulnerable to be separated from each other. So as the neural retina is loosely attached with the retinal pigment epithelium and retinal pigment epithelium is firmly attached to the choroid, therefore the detachment results in the separation of the retinal pigment epithelium and the sensory retina.